the more you contribute into open source, the higher the chances that you're going to get a remote job. If you maintain a presence online, then eventually it is like you're bound to get some opportunities out of it. कभी कभार वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा होता है कि आप हफ्ते में 4 दिन काम कर रहे हो, 3 दिन काम कर रहे हो, आपसे वो भी कोई नहीं पूछ। Hmm. आई मीन जब डिग्री ले Hmm. ही रहे हो तो Okay. थोड़ा उसको एवरेज रखो। एटलीस्ट ट्राई करो कि 6.5 से लेके 8 के बीच में आ जाए। उस there's a downside to working remotely as well. What's up, people? It's your boy Sanskar. In this video, I talked to Apoorv Goyal, who is a college dropout and currently working as a remote software engineer. In this conversation, we'll answer all your questions about remote work: how to find a job, how to prepare, what's the work culture like, what's the pay like, and a bunch more nuggets here and there. So, press subscribe and let's begin. Let's quickly jump on to the main topic for discussion today. How did you get your remote job? Well, my first remote job that I got, it was through, you could say, from a reference as well. I got a reference. One of my friends was already working in a remote company in Melbourne, Australia. He was working remotely from India, but the company was Melbourne based. And I was like, at that point of time, that friend of mine was a flatmate as well. And we were like coding together and working on a few projects together. And he was also doing that remote job as well. So that's when like he introduced me to his manager, and we just had this conversation to begin with. And I said that I can like give it a try, see how I can contribute to the product and things like that. So I started working in that startup. I started working in that product, and I guess after about a week of time, I was like hired full time into that. So that was initially how I got my first remote job. And obviously, when you get one remote job, then it keeps coming after that. So scoring your first remote job is the most, I would say, the most difficult thing when you're starting your career. But once you get one remote job and you understand, how things work, then eventually it becomes easy after that. Interesting. So, what was your preparation for your first remote job? Was it similar to any other job, or you had great projects? Well, I had a good portfolio. I wouldn't say that it was a great portfolio because it still lacked a lot of things, but I had a decent portfolio. I had a lot of freelancing experience, so it was not like I was a complete rookie. And in Right. today's time, what's important is that companies do not want to, the employees that companies are hiring, they do not want to invest in an employee just to train them. They want employees that are pre-trained, that can join the team and start working in as soon as possible, right? In 2 weeks, 3 weeks, at most 1 month's time. But that's the most that companies want to afford in today's time. And that's why they pay that much amount of money as well when we talk about remote jobs. So I think for me personally, what I had was that since I had a lot of real world experience building real world applications while I was freelancing, that was a big plus because whatever interviews I used to give back in the days, I used to talk about those projects. And the interviewers, they kept asking me about more and more questions about these projects, what I did to solve this problem, did I encounter that problem, and things like that. And all this real world experience kind of helped me that I achieved through freelancing. uh, Again, I mean, all the projects that I built in my freelancing, I could also showcase them as a part of my portfolio as well. So I didn't have to build a portfolio separately just to get a job, but whatever I did in my freelancing days was also my portfolio. And I think with these two things, and I didn't do competitive programming, I didn't do DSA and things like that. And that is something that is asked in a few companies, but I was not asked about solving some DSA questions and things like that. So that is something that I didn't do. But apart from that, I guess being prepared, being job ready from day one is something that is very important when you're looking for a remote job, because any employer is going to look for an employee that is job ready from day one. Do you think that there is a relation between open source and getting a remote job? I think it's highly correlated. I mean, by correlated, I mean ki if the more you contribute into open source, the higher the chances that you're going to get a remote job. It's not absolutely mandatory कि open source करो ही तो ही Okay. remote job मिलेगा. There are exceptions,
But in today's time, the thing is that I mean, a lot of people, I mean, a lot of students have been applying into interviews and things like that, and I interact with these people. So hota kya hai, I mean, even if you go into, you know, some uh, website like remote base or something like that, जिसमें remote jobs आती रहती है posted, and if you go to any of these and किसी भी company का जाके job description देखोगे, उसमें good to have में उन्होंने जरूर mention कर रखा होगा कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट अगर कर रखा है, या मतलब इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, Hmm. दैट इज अ बिग प्लस. अब इसका एक सिंपल सा रीजन है. उसका रीजन ये है कि एक टाइम पे जब रिमोट जॉब्स, आई मीन जब रिमोट जॉब्स मार्केट में आने लगा और जब ओपन सोर्स फैलने लगा, एटलीस्ट इन द डेवलपर कम्युनिटी, उससे Right. पहले भी लोग ओपन सोर्स करते थे. आई मीन जितने भी आज तक टूल्स बने हैं, इवन द लैंग्वेजेस दैट वी टॉक अबाउट, जावास्क्रिप्ट वगैरह, सब ओपन सोर्स ही है. कुछ किसी का Right. क्लोज्ड कोड बेस थोड़ी है. इवन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स टिल डेट. तो ओपन सोर्स पहले भी चलता था. अब ये है कि अब लोग ज्यादा करने लग गए हैं. और कंपनीज ने एक चीज मेन रियलाइज की है. वो उन्होंने ये रियलाइज किया है कि जो प्रोडक्ट कंपनीज ने पैसा दे के बनाया है, कंपनीज इन्वेस्टेड इनटू दैट प्रोडक्ट, कंपनीज ने एम्प्लॉयज हायर किए, कंपनी ने मार्केटिंग टीम हायर की, कंपनी ने 10 टाइप के यूनिट्स बना लिए और उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाया. उन प्रोडक्ट से आज के टाइम पे ओपन सोर्स के प्रोडक्ट्स compete कर रहे हैं मार्केट में आके. Hmm. कि Right. एक कम्युनिटी ने एक ओपन सोर्स टूल बना दिया एंड इट इज गुड इनफ टू compete with a product that is like commercially built with millions of dollars of investment, राइट. तो इस टाइप के क्योंकि काफी सारे इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं, द कंपनीज हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि rather than like burning so much money into like creating a team and maintaining the project and things like that, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आगे जाके डेवलपर्स को ही यूज करने हैं, डेवलपर्स को ही Hmm. बनाने दो, Makes ओपन sense. सोर्स कर दो. अपना टूल ओपन सोर्स कर दो. तो कंपनीज ने ये धीरे धीरे रियलाइज करना स्टार्ट किया है कि अगर हम भी अपना, हम अपनी टीम में क्या, हम अपनी टीम में 2-3 बंदे हायर कर लेते हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट Right. मेंटेन कर लेंगे हमारा, है ना. हम लोग कुछ डेवलपर एडवोकेट्स हायर कर लेते हैं जो थोड़ा मतलब आउटरीच इंक्रीज कर देंगे इस प्रोडक्ट की. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, if we keep this project open source, we are saving huge cost. So since companies have started realizing it, a lot of companies have also started moving their, at least their technical tools or services and products into open source. कंप्लीटली नहीं, बट उसकी कुछ सर्विसेज या कुछ ना कुछ वो पार्शली धीरे धीरे ओपन सोर्स पे माइग्रेट कर रहे हैं. और इस रीजन से आई मीन दे आर लुकिंग फॉर फोक्स हु ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन ओपन सोर्स, सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. मे बी Right. उन्होंने कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखा है, उन्होंने कोई repository मेंटेन करते हैं या ऐसा कुछ जो भी है. Hmm. बट Okay. आई थिंक इन टुडेज टाइम इट्स अ बिग प्लस इफ यू आर अ open source contributor and you like are looking for a remote job. Wonderful. So let's talk about the work life, or like let's say the work culture for a remote job. Because abhi last time Diwali pe, some of my friends told me that they did not get Diwali holidays. So it might be a very niche scenario, but how is the work life balance in general for a remote job? See, I mean, it depends to depend. Like depends on company to company because, I mean, even me for myself, I have worked in a few like places which had bad culture, and I worked in a few places that had excellent culture as well. Right. तो थोड़ा सा वो ऐसी चीजों पे भी डिपेंड करता है. Let's say if you are someone who are working in a relatively small team, right? A relatively small team में अगर काम कर रहे हो किसी startup में, if you are working, then the culture is going to be good. The reason being there are less people to manage. I mean, अगर टीम में ही 10-12 बंदे हैं तो there are overall less people to manage, और उसमें I mean इतना ज्यादा माइक्रो मैनेज करना नहीं पड़ता, है ना. जो करना सही भी नहीं है, बट वो वैसे भी नहीं करना पड़ता. सबको अपना अपना काम पता है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, अच्छे से डिवाइडेड है काम पूरा, है ना. तो जस्ट पीपल की वर्किंग ऑन इट. एंड उस टाइम पे ऐसा रहता है कि कभी कभार वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा होता है कि आप हफ्ते में 4 दिन काम कर रहे हो, 3 दिन काम कर रहे हो, आपसे वो भी कोई नहीं पूछ Hmm. रहा, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द जॉब डन. आपको एक Right. वीकली सेट ऑफ गोल्स मिला है कि इस हफ्ते ये अचीव करना है. अब वो आप 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, नो वन केयर्स, है ना. तो Hmm. उस टाइप का भी कल्चर होता है. कभी कभार क्या होता है कि कंपनीज रिलेटिवली थोड़ी बड़ी होती है साइज में, है ना. अब बड़ी कंपनीज के साथ ये होता है कि अब वहां पे मैटर करता है कि आर यू अ माइनॉरिटी, राइट. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स एग्जांपल, जहां उन लोगों को दिवाली पे भी काम करना पड़ा या दे डिडंट गेट एन ऑफ ऑन
दिवाली पर्टिकुलरली, देन इट कुड बी दैट दे आर वर्किंग एट सम कंपनी जहाँ पे रिलेटिवली थोड़े ज्यादा एम्प्लॉयज है, बट इंडियंस इतने Gotcha. नहीं है. तो I mean, Diwali is a big thing for Indians. It's a festival for Indians, but they dedicatedly do not have a holiday for that because उनकी कंपनी में इंडियंस ही इतने नहीं है. गिनके दो Hmm. तीन काम कर रहे हैं 50-100 के वर्कफोर्स में से, है ना. Right. तो उस केस में आई मीन द कल्चर थोड़ा उस टाइप का होता है कि यू माइट फील अ बिट डिस्क्रिमिनेटेड कि यार मुझे हॉलीडे नहीं मिल रहा, हम लोगों को हैलोवीन की छुट्टी मिल रही है, हम लोगों को थैंक्स गिविंग की छुट्टी मिल रही है, बट हमें दिवाली की Hmm. नहीं मिल रही हमारे फेस्टिवल की. तो उस टाइप की चीजें Right. होती है. आई आई मीन आई ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स जिसको दिवाली की छुट्टी नहीं मिली, बट अगले उसके हफ्ते 4 दिन की छुट्टी है, जस्ट बिकॉज आई गेस 24th November is Thanksgiving in US, Right. right? So I mean this kind of happens, but the thing is कि just like just as companies take an interview just to see if you are a good fit or not, जब कोई भी HR आपसे पूछता है, whenever you are joining a company, whenever the HR asks you do you have any questions, any doubts regarding the company, make sure you ask some questions about the culture of the company. वैसे तो आई मीन एचआर का काम होता है कि एचआर राउंड में ही दे एक्सप्लेन द कल्चर टू यू, है ना. बट अगर फिर भी उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया कि किस टाइप का कल्चर होता है, आई मीन इज इट लाइक कि दिन में 5-5 6-6 मीटिंग्स होती है, या Hmm. आई मीन Right. और फिर कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, कम्युनिकेशन सिंक्रोनसली होता है या एसिंक्रोनसली होता है, कि आप जब ऑनलाइन आ रहे हो तब आपने अपना अपडेट डाल दिया, rather देन आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑनलाइन आके अपना Hmm. अपडेट डाल रहे हो, सुबह 6 बजे 7 बजे उनके टाइम के हिसाब से, है ना. इफ लेट्स से यू वर्किंग फॉर अ यूएस Right. कंपनी, देन आपको मोस्टली आई मीन जो आपका फाइनल अपडेट जाएगा दिन का, वो आपके सुबह के 5-6 बजे जाएगा, इफ यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, बिकॉज दैट्स लाइक द Hmm. एंड ऑफ देयर डे, देयर वर्किंग डे, राइट. बट अब कुछ कंपनीज इसमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी अलाउ कर देती है. वो बोलती हैं कि आप जब ऑनलाइन आ रहे हो तब आप हमें एक अपडेट डाल दो, है ना. एंड इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन आएंगे, विल लुक एट इट, विल प्रोसेस इट एंड विल टेक्स्ट यू बैक कि आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, राइट. सो ये सारे क्वेश्चंस पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So basically, why you chose the remote job? Like you saw some benefits, you saw some improvements rather than traditional job, or just like happenstance? No, so I mean the thing is that whenever like I am the sort of person जो कभी भी इस तरीके से काम नहीं करता कि यार 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक ही काम करना है शाम के, उसके बाद मैं कंप्यूटर हाथ नहीं लगाऊंगा, उससे पहले कंप्यूटर हाथ नहीं लगाऊंगा. आई एम नॉट दैट Hmm. सॉर्ट ऑफ पर्सन. मुझे काम थोड़ा उस तरीके से करना पसंद है कि जब मेरा मन कर रहा है, व्हेनेवर आई एम फीलिंग लाइक इट, व्हेनेवर लाइक आई फील कि मैं अभी 4-5 घंटे बैठ सकता हूँ बिना उठे, I'll pick up my laptop and I'll start working then, right. So one of the major like drawbacks, I also like was in an environment जब obviously जब मैं start कर रहा था, I had a few flatmates and things like that, so I was in an environment where I was actually looking at a few people who were already doing a job, और मैं उनका देख रहा था Hmm. already, मैं उनका देख रहा था Okay. कि वो सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं, है ना, रिमोटली ही कर रहे हैं, बट even their job is like very time bound, है ना. इंडिया में रह के वो दे आर वर्किंग रिमोटली, बट स्टिल आई मीन दे आर वेरी टाइम बाउंड इन द सेंस कि वो सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं, उनका 9:30-10 बजे एक स्टैंड अप है सुबह सुबह, एंड देन शाम को 5-6 बजे फ्री हो रहे हैं. दिन में अगर उनसे ये भी बोलो कि यार चल बाहर चल के लंच करके आते हैं, दे आर नॉट फ्री फॉर दैट, राइट. सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई वाज जस्ट लाइक यार ये तो नहीं करना. आई मीन अपना कुछ कर लेंगे बट ये नहीं करना. एंड द सेकंड रीजन व्हाई लाइक आई रियली डोंट लाइक द इन ऑफिस जॉब्स इज दैट उसमें ना थोड़ा मतलब वैसे रहता है. आई मीन there are a lot of factors that hinders your peace of mind. I mean, you are around so many people. I have personally seen this for a few people. You are around so many people, इतने सारे लोगों के आसपास होते हो, and different people have these different personalities, right? कोई किसी टाइप का है, कोई किसी टाइप का है. Being around them all the time, कभी कभार क्या होता है कि some people start eating a lot of your mental space, right? They start Yep, it can happen. getting on your nerves. They start getting on your nerves. वो थोड़ा ना मतलब सर पे चढ़ने लग जाते हैं, है ना. दे उनको लगता है कि just because they might be superior or a few months
older, and ये सारी चीजें ना थोड़ा इंडिया में ही होती है ना. एंड इफ यू टॉक अबाउट इन ऑफिस जॉब्स अब्रॉड, वहां मुझे नहीं पता, हो सकता है द कल्चर माइट बी अ बिट डिफरेंट, है ना, इन ऑफिस जॉब्स व्हेन यू डूइंग अब्रॉड. बट इंडिया में क्या है, इंडिया में पॉलिटिक्स चलता है कभी कभार जॉब्स में, है ना. आई मीन Hmm. कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है किसी को, कोई कुछ बोल रहा है पीठ पीछे, पता नहीं क्या चल रहा है. ये सारी चीजें मैंने होते हुए देखी Right. है ना. तो ये मुझे वैसे नहीं पसंद था. प्लस जो टाइम बाउंड होते हो आप, उस तरीके से मैंने कभी काम ही नहीं किया. मुझे थोड़ा फ्रीडम पसंद था, है ना. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई इवन ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज. मुझे कॉलेज वैसे भी नहीं करना था, पसंद ही नहीं था मुझे. क्यों? क्योंकि मैं बाउंड हो रहा हूँ एक तरीके से. भाई मेरे को 9 बजे कॉलेज जाके 5-6 बजे छुट्टी मिल रही है, तो Hmm. मुझे करना ही नहीं था वो. जस्ट बिकॉज मैं इसी टाइम पढ़ सकता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं रात में पढ़ूंगा. मेरी मेरी मर्जी है ना, मेरा Right. टाइम है. जरूरी थोड़ी है मैं दिन में ही पढूं. तो ये टाइप की चीजें मुझे वैसे ही मतलब सही नहीं लगती थी. तो एंड बैक देन आई मीन रिमोट जॉब का इतना कल्चर भी नहीं था. तो आई हैड अ लॉट Hmm. ऑफ चैलेंजेस इन द सेंस कि पीपल यूज्ड टू आस्क कि भाई तू जॉब नहीं ढूंढ रहा है, आई मीन यू आर एलिजिबल फॉर अ जॉब एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, तो तू करेगा क्या जिंदगी में, मतलब क्या प्लान क्या है फिर, इफ यू आर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू आर नॉट लाइक, आई मीन रिमोट जॉब्स एज सच मिलती नहीं है, फ्रीलांसिंग भी मिलना इतना इजी होता नहीं, तो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू. Right. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू डू अ जॉब, बट रिमोट जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं होता, तो आई जस्ट स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग कर रहे थे, ओवर द टाइम करते रहे. बट उसमें भी क्या होता है, एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा, स्पेशली आई मीन व्हेन यू आर एट द बिगनिंग ऑफ योर करियर, ओवर द टाइम थोड़ा ना इनकंसिस्टेंसी आने लग जाता है. इनकंसिस्टेंसी Hmm. इन द सेंस कि Right. यू आर नॉट श्योर कि अगले महीने मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स होंगे. राइट, इस Hmm. महीने का तो चल Makes जाएगा, sense. ठीक है, दिस मंथ यू हैव 2 प्रोजेक्ट्स, 3 प्रोजेक्ट्स, व्हाटएवर इट इज, you're completing those प्रोजेक्ट्स, तुम्हारा खर्चा निकल रहा है. अगले महीने क्या होंगे, वो अनसर्टेनिटी जो होती है, दैट इज वेरी लाइक freaking you all the time whenever you are freelancing. So that was one like downside of it. तो इसलिए freelancing भी was something that I wasn't a lot inclined towards. I felt कि it's easy to make a few quick bucks out of freelancing, थोड़े पैसे कमा लिए freelance करके, but it's not something that I can sustain for a long period of time, at least not at my beginning of my career. थोड़े साल बाद when I have enough network and things like that, that is the time जब मैं उसको full time भी pursue कर सकता हूँ as a Hmm. freelancer. But beginning में इतना नहीं होता pipeline प्रोजेक्ट्स का कि आ रहे हैं, है ना. तो यू कैन नॉट बी केयर फ्री कि अगले महीने प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा. तो वो सारी चीजें देखते हुए आई मीन मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया था. बस बात ये थी कि रिमोट जॉब्स इतनी आसानी से मिलती नहीं थी. तो वो मेरे को, मेरा मतलब थोड़ा सा लकी फैक्टर ये रहा था कि जो मेरा फ्लैटमेट ही था डायरेक्टली, वही एक मेलबर्न बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा था. तो उससे करवा के, मतलब उससे उसके थ्रू बात करके आई गॉट इनटू दैट कंपनी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन इट. बट या आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉब तो मेरे को वैसे भी नहीं करनी थी. आई मीन मेरे को पता था कि मैं इन ऑफिस या फिक्स्ड आवर्स ऑफ टाइम वाली जॉब नहीं करूंगा, Hmm. है ना. आई Okay. आई वांट टू बी द ओनर ऑफ माय टाइम एटलीस्ट. मैं जब जो करना चाहता हूँ वो उतनी फ्रीडम होनी चाहिए. एंड if I am being trusted, see my main thing is that if the employee can trust, if the employer can trust an employee, अगर मेरा जो मैनेजर है या whatever my company is, if they can trust me कि मैं मतलब होल हार्टेडली काम करूंगा, एंड विदाउट बाइंडिंग मी विद सम आवर्स कि इस टाइम से इतना टाइम ही काम करना है, इफ दे कैन ट्रस्ट मी इनफ देन आई विल बी लॉयल टू देम. मतलब उसके बाद आई मीन इफ दे आर गिविंग मी सम टास्क, आई विल बी हैप्पी टू डू इट. मैं उसमें एक्स्ट्रा आवर्स डाल दूंगा यार. मतलब मेरे को Hmm. ये नहीं है कि Right. दिन में 8 ही घंटे काम करना है. अगर वो कंपनी मुझे इतनी फ्रीडम देती है कि मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, जब चाहूँ जहां से चाहूँ कर सकता हूँ, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, तो मैं 4 घंटे की जगह, 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे डाल दूंगा दिन में. मुझे उससे नहीं Hmm. प्रॉब्लम. बट एटलीस्ट वो ट्रस्ट होना चाहिए ना कंपनी का कि कर लेगा. तो दैट इज Right. समथिंग दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. Awesome. मतलब वर्क सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. हाँ, बहुत सारी चीजें होती है. आई मीन ये पॉलिटिक्स वगैरह भी जो मैं बोल रहा हूँ, ये इंडिया में तो मैंने बहुत देखा है. आई मीन इंडिया में इफ यू गो इनटू एन ऑफिस यू विल सी लाइक प्लेंटी ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग एवरीवेयर, है Hmm. ना. लोग पता नहीं दोपहर को लंच में चाय पीने जा रहे हैं, नीचे फालतू बकवास कर रहे हैं आपके पीछे आपके बारे में कि यार ये बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसा है. तो ये सारी चीजें दे ईट अप अ लॉट ऑफ मेंटल स्पेस. आई मीन यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग यार इसने मतलब हाउ 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 डेयर ही
even say Hmm. something like that. बोलना है Right. भाई, if you have a problem with me, come speak to me directly. तुम किसी और को क्यों बोल रहे हो मेरे पीछे, है ना? तो इस टाइप की चीज है, आई मीन बहुत होती है. But there's a downside to working remotely as well. And the downside is कि when you're like absolutely alone, जब तुम कहीं से भी काम कर रहे हो, घर पे बैठे हो, अकेले बैठे हो, then I mean जो थोड़ा एक social life होता है ना, वो थोड़ा सा affect होने लग जाता है over the time, because you're not actually Yeah. इंटरैक्टिंग विद पीपल इन रियल लाइफ, है ना? तो जैसे इन ऑफिस जाने से थोड़ा ज्यादा ही रिएक्टिंग हो जाता है, यू ओवर रिएक्ट विद पीपल, है ना? बहुत ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट हो जाता है. ना जाने पे बहुत ही कम लोगों से इंटरैक्शन बचता है ना? तो दैट इज समथिंग दैट इज अ वेरी बिग डाउनसाइड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स बेटर टू like opt for remote jobs. Awesome. So, over the years, have you realized some best practices that folks can undertake in college in order to get a remote job? Because abhi colleges mein kya hai, folks are still doing DSA, competitive coding. Does that Hmm. make them ready for a remote job? Uh, I think competitive programming to nahi, but DSA is something that I feel is still somewhat important. One of the reason is that DSA is not just like solving some questions. It's about problem Yeah. solving. And you're solving a problem. You're trying to find the right data Hmm. structures. You're trying to find the right algorithm just to reduce that time and space complexity for that particular Right. problem, right? So it's making you a problem solver rather than ratta laga liya ek problem ka solution. Hmm. What you should rather focus on is to like बिहाइंड द सीन्स मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, हाउ आई एम आई अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम. मेरे सामने प्रॉब्लम है, मैं किस तरीके से, हाउ एम आई ब्रेकिंग दिस डाउन, एंड देन हाउ एम आई choosing a right data structure for it, choosing the right algorithm for it. DSA is more about that, है ना? And डीएसए कर लो थोड़ा बहुत. इट्स नॉट लाइक डीएसए बिल्कुल मत करो, थोड़ा बहुत करो, दिन में 1-2 घंटा डीएसए, मैक्स टू मैक्स अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ डीएसए एवरी डे इज गुड इनफ. एंड उसमें भी आई मीन फॉर डीएसए सेट अ like have a set of rules for yourself कि I'll only spend like a maximum of 25 to 30 minutes doing DSA or anything like that. Spend doing up solving a particular question in DSA, right? So एक क्वेश्चन में अगर फंस गए, लंबा फंस गए थोड़ा, 25-30 मिनट हो गए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? डोंट वेस्ट टाइम इन दैट वन क्वेश्चन. कुछ टाइम Hmm. बाद, कुछ दिन बाद दोबारा आके वो ट्राई करना, क्वेश्चन नहीं होता सोल्यूशन देख लेना, कोई बात नहीं, है ना? बट फंसे मत रहो. डोंट बी एक्सट्रीमली स्टबन. बच्चे क्या होते हैं, दे बिकम एक्सट्रीमली स्टबन कि भाई मेरे को यही करना है, मुझे डेवऑप्स Hmm. ही करना है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं, या मुझे वेब डेवलपमेंट ही करना है, या मुझे डीएसए में ही करना है. एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 4-4 घंटे बैठे बच्चे वही क्वेश्चन लेके कि भाई आज तो यही करके सोऊंगा. इतना stubbornness जो है, it will like fire, like backfire on you. So don't be stubborn. If you are a college student, just try to be very like agile, very adaptive to whatever is going on in the industry, क्योंकि टेक्नोलॉजी में नई चीजें आती रहती है. आज Right. मतलब कुछ है, कल कुछ और होगा, है ना? तो नए फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, नए वर्जन्स आते रहते हैं. हर वर्जन के साथ सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, खास करके जब मेजर वर्जन चेंज आता है. बट so these are some of the things. Apart from that, थोड़ा बहुत अपने एक public profile build करना, I mean it's very important to like build a personal brand and a profile for yourself. Okay. And one of the reasons for that is that like this helps you in gaining that outreach, right? I mean people Hmm. are going to Right. start acknowledging you over the time. People are going to start getting to know you about time, understanding your skill set and things like that. And over the time that opens up a lot of opportunities, because we all know how social media works, right? I mean abhi who like जैसे for example if I talk about Twitter, the people that I follow on Twitter, वो लोग जिनको फॉलो करते हैं मुझे उनके ट्वीट्स भी दिखते हैं फॉर सम रीजन, राइट? सो आई मीन इट्स लाइक अ नेटवर्क इफेक्ट that you know some Right. people follow you and then some people follow them, so eventually I mean uh, your network is going to keep growing. Eventually I Yeah. mean कुछ लोग जो हायर कर रहे होंगे, your profile would get highlighted in front of them as well. And it's more about reinforcement, right? I mean when I use Twitter, अभी अभी मैं बहुत एकदम फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, राइट? सो व्हेन आई यूज ट्विटर, मैं ट्विटर पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता है, इफ आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग अराउंड ट्विटर, देयर आर सम नेम्स दैट आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स ऑन माय ट्विटर फीड. इतनी बार मैंने वो नाम देख लिया, मुझे वो नाम याद हो गया उनकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ.
and Hmm. I'm like very frank about it. मैंने इतनी बार देख लिया, मुझे वो याद हो गए हैं प्रोफाइल पिक्चर के साथ। और फिर कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जो मेरे लिए रोज न्यू होती है, जो रोज मेरे सामने न्यू आती है ना। अब the thing is कि if let's say someone comes to me and says कि यार I'm looking for a DevOps person and or a web development person, I want to hire someone, do you know anyone? तो अब मेरे सामने जो रोज नाम आते रहते हैं ट्विटर पे, है ना, एंड आई Hmm. नो दैट दिस पर्सन का ये नाम है, ये डीपी और ये करता है ना, जस्ट बिकॉज मेरे सामने वो रोज आ रहा है। मैं रोज ट्विटर स्क्रॉल करता हूँ, रोज मेरे सामने कुछ नाम आते हैं, है ना। तो if I'm like getting reinforced by those names and those skill sets again and again, the first person that will come into my mind when I'm recommending is that person। मैं बोलूंगा कि ट्विटर पे एक बंदा है, वो वेब डेवलपर है या डेवऑप्स करता है ऑलरेडी, एंड I'll get you Right. connected to him, as simple as that, है ना। तो इस तरीके से आई मीन इवेंचुअली इफ यू maintain a presence online, then eventually it is like you're bound to get some opportunities out of it। Inevitable है कि कुछ opportunities मिलेंगी ही मिलेंगी। और वो presence maintain करना is also not difficult when you're a college student। Hmm. whatever you are learning, मैं अभी let's say आज मैंने कुछ नया पढ़ा, मैंने SQL databases के बारे में पढ़ा, या मैंने service meshes के बारे में पढ़ा, या whatever I'm learning, just like create a tweet about it कि आज मैंने ये पढ़ा, यहाँ से पढ़ा और क्या करना है उसमें, है ना। इतनी सिंपल सी ट्रिक से यू कैन मेंटेन अ सोशल लाइक presence for Yeah. yourself, just Hmm. say eventually I mean you can grow your network as well, get renowned for what you do, people eventually will start acknowledging you for what you do, right? So all of that is important. Apart from that, open source is one major plus, and apart from open source, try to become part of some communities, try to participate in all the hackathons, not all the hackathons, Hmm. just pick a Okay. few कि मुझे इसमें participate करना है, उसमें participate करना है, focus on them कि I want to participate in GSOC, let's say, or I want to participate in this particular hackathon or Microsoft student program or GitHub student expert, whatever it is। जिस भी Hmm. प्रोग्राम Right. में पार्टिसिपेट करना है, पिक अप हैंड पिक अ फ्यू प्रोग्राम्स दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन, एंड जस्ट ट्राई टू सी कि पास्ट में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो प्रोग्राम क्रैक किया हुआ है, दे cracked it, they got into it and they successfully completed it, right? तो ऐसे कुछ लोग ढूंढो, I mean you can easily find about 5 to 10 people, right? And See, a lot of people ask कि क्या करना चाहिए, I mean how to crack GSOC। अब कुछ कितने लोगों के मैसेज आते हैं कि अपूर्व कैन यू Right. टेल मी हाउ टू क्रैक GSOC और थिंग्स लाइक दैट। बट ये चीजें ऐसी हैं, इट्स नॉट अबाउट आस्किंग एनीवन, ये चीजें यू कैन फाइंड द आंसर टू it yourself। The trick is Hmm. simple. If Right. let's say you want to crack GSOC, just try to find 10 15 people that have already cracked GSOC, है ना। उन्होंने एंड अगर वो लोग कुछ कंटेंट भी बनाते हैं, है ना, if they let's say create some content around it, तो try to see कि उन लोगों ने क्या टिप्स शेयर कर रखे हैं। I mean whoever has cracked GSOC, all of them have a Twitter profile where they share some tips कि ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इतने सारे threads होते हैं, 10 चीजें होती है। just collate a lot of these resources and see कि सब में common points क्या है इन बंदों में जिन्होंने Hmm. already Right. GSOC क्रैक किया। what were the things they all did और all of them had, उन सब में ऐसा क्या था या उन सब ने ऐसा क्या किया जो कॉमन पॉइंट है, जो अगर तुम भी करोगे मोस्ट प्रोबेबली तो तुम्हारा जीसॉक क्रैक हो जाएगा। इट कुड बी दैट उन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जीसॉक की, उसमें वो पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे थे जीसॉक के लिए, विच इज लाइक अ बिग प्लस इफ यू वांट टू क्रैक जीसॉक। अगर आज कोई जीसॉक में ऑर्गेनाइजेशन आती है, यू हैव टू लाइक इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर फॉर यू टू क्रैक इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग इनटू इट आप बिफोर लाइक अप्लाइंग। तो उससे क्या है, प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो जस्ट कम लाइक फाइंड ट्राई टू फाइंड दीज पीपल जिन्होंने लेट्स से एमएलएच क्रैक कर रखा है या जीसॉ क्रैक कर रखा है, वट एवर इट इज, उन लोगों का कंटेंट फॉलो करो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे डिड, उन लोगों ने कैसे किया, क्या टिप्स वो लोग शेयर कर रहे हैं। रीच आउट टू देम कि आपके पास क्या टिप्स है, सिर्फ एक बंदे से मत पूछो, बहुतों के पास रीच आउट करो, है ना। एंड इवेंचुअली आई मीन द गेम प्लान है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा बस एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर में यू शुड जस्ट लाइक explore a little bit of DSA, try to find these programs, maybe apply to them, थोड़ा बहुत open source वगैरह भी start कर सकते हो, but just focus on a few technologies, थोड़ी languages वगैरह सीखो। सेकेंड ईयर में like hardcore एकदम इन programs के पीछे जाओ,
GSOC वगैरह ट्राई करो, MLS ट्राई करो, बहुत सारी चीजें ट्राई करो। सेकेंड ईयर में अपना ओपन सोर्स प्रोफाइल बिल्ड करो और DSA साइड बाय साइड थोड़ा बहुत करते रहो। और थर्ड ईयर ट्राई करो, इंटर्नशिप लग जाए। आई मीन अगर ये 2 साल सही से थोड़ा ओपन सोर्स, इफ यू spend good enough Right. time in open source, if you spend good enough time in, you know, in communities, joining communities, contributing into communities, and in these programs, GSOC and things like that, then eventually third year, mein, it's highly probable that you'll get an internship, right? And if you get an internship, then uske baad, by the end of fourth year, easily you'll get a remote job out of it. Awesome. This was a very nice and a very informative answer for most of the students, I feel. Yeah. Do you think that CGPA matters for a remote job? No, I don't think CGPA matters. It's just that if you are getting a degree, I mean, if you don't have a degree, then anyways it doesn't matter. But if you're getting a degree, then just make sure that it's not below average. I mean, जब डिग्री ले ही रहे हो तो Okay. थोड़ा उसको एवरेज रखो। एटलीस्ट ट्राई करो कि 6.5 से लेके 8 के बीच में आ जाए। उससे Hmm. मतलब एकदम Okay. 6 से नीचे तो ना ही जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो डोंट लेट इट Okay. फॉल बिलो 6 कि मतलब मैटर नहीं करता का मतलब ये नहीं है कि सीधा 4 ही CGPA आ रही है तो भी जॉब लग जाएगी। So that is like a very Okay. bad thing in your like in your resume, right? So try to get an average of 7 to 8. It's good enough. 7 to 8 के लिए मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, इजीली आ जाता है ना? But 7 to 8 is good enough if you're like, if you want to actually showcase in your resume or your profile that you have done a college and you have a BTech. अगर उससे भी कम है तो मेंशन ही मत करो फिर कि कुछ पढ़ रखा है आगे का। Thanks for having me, Sanskar. And guys, do make sure to subscribe to his channel. He has been doing an excellent job. I was going through some of his videos. Amazing podcast and good tips, great tips for college students and people who are trying to break into tech. So do give him a follow and subscribe to his channel. Follow him on Twitter, right? And amazing work, Sanskar. Thanks for having me. Thank you so much, Apoorv. Thank you so much.